Kanan is present. So welcome Kanan to you this session of the class. So today we'll begin with the book 2 of urban sociology, that is and block 5. It's completed in 4 class, that is block 4. Today we'll begin with block 5, that is urbanization and its impact. Urbanization and its impact on different social institutions. So before stepping to analyze the urbanization and its impact, we must know what is urbanization. Ordinarily, urbanization means a process of transformation, a process of mobility of rural lives to urban area. When rural people migrate from rural to migrate to urban areas, we call it a process of urbanization. So urbanization is commonly understood as a process by which a settlement and its population assume multiple urban characteristics. So when a urban population, a settlement and its population attain certain urban characteristics, we call it also the process of urbanization. So urbanization means expansion of urban area or urban lifestyle is also referred to urbanization. So population, urban. Sir, namaskar. Hello. Sir, hello. When you say yes, sir. When you are saying important points, please repeat it. So urbanization. First, understand what is urbanization. Urbanization is a process of migration of rural population to urban population, to urban area. So this is also referred to as urbanization. So besides, urbanization also refers to increasing of urban population. It also refers to expansion of city. It also refers to when urban settlement or a human settlement or its population acquire certain urban characteristics, we also call it as urbanization. So urbanization, in other words, we also mean when the human settlement of an urban area are engaged, the population of this area are engaged in 75% of its population are again engaged in non-agricultural occupations. Is also, we call it as a urbanization. So urbanization is a process that is continuous. The process means something that is continuous is known as urbanization. So urbanization, when an area grows in size, we call it urbanization. So urbanization has certain characteristics: increasing population, increasing density of population, or increasing heterogeneity in population. When population becomes heterogeneous, that means different group of people live in urban area, we call it a heterogeneous population. Because people from different countries, different areas of the country migrate and come to settle in urban area, then we call it a heterogeneous population or a diverse population. Population having multiple cultural, social or economic characteristics. Then we may also say is that socio-cultural and economic features. So urban people have a peculiar type of social features. They belongs to a changed social structure. So these are the certain characteristics of an urbanization that we found in urban area. So urbanization is a process of change of the lifestyle of people. So when the people of rural area migrate urbanization go, expansion of city expansion to different suburb areas adjacent area urbanization also refers to a changes in lifestyle of people. ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ in accordance with the urban lifestyle, then we can also call it as a urbanization. So urban and urbanization.
So being and becoming urban, when the human population being and gradually becoming urban in its features, then we also call it as urbanization. So urbanization may in this unit in the fifth block what are the impact of urbanization on different social institutions, that will be discussed in later on. But first we understand the level, trends and patterns of urbanization. So urbanization is nowadays is a worldwide phenomenon. Not a single country in the world escape from the process of urbanization. Everywhere we found urbanization. So, but what is important is what is the level, what is the trend, and what is the pattern of urbanization. So, even in the absence of some features, features absence the urban feature that increasing population, increasing density of population, heterogeneity among population, ये सब feature न थाई मध्य गोटे area को गोटे urbanization process मध्य रही पारे केमती when changes in or when people of a particular area acquire urban status. So urbanization actually is a process where a non-urban area became urban. When a non-urban area became urban, it is also called as a urbanization. So urbanization in its wider process includes both rural area transformation urbanization urban city expansion urbanization it is a process by which urban area became non-urban area became urban and a less urban area became more urban. Urbanization process को include करे. For example, Bhubaneswar 50 years prior to 25 years it was a urban, but it was a less urban. But nowadays it is becoming more urban. So from a less urban to more urban, it's a city. City ro different stages of urbanization achi, the level of urbanization achi. So with the passage of time, by acquiring new urban characteristics, a less urban area became more urban. So सेटा को मध्य हमें urbanization process भीतरे include करी परिया. So केमती गोटे less urban area टा अधिक urban हबो by acquiring more and more urban characteristics. That is so you mean that there are certain class 1 cities like Delhi. So when other cities, metropolis, so when the urban area acquire the characteristics of a metropolis, so we can call it a urbanization. That means it is level of urbanization is increasing of a city from this level to a higher level. That is from a urban area to a metropolitan area. So this is also a call when a metropolis became a necropolis. We can also it is also referred to as a urban area. Can metropolis टा मध्य आउट को ऊपर उठी जाएगी necropolis होची. तो देख सेटा को मध्य हम urbanization बोली कोई परिया. That is also we call as a urbanization process. So or in other words, when the people of an urban area or a people in urban area, a new entrance into urban area acquire more urban lifestyle, we also call it as urbanization. When new entrants to urban area acquainted themselves with or attuned themselves to new principles of urbanism, we also call it as urbanization. And that's why urbanization is a fully diverse process in different aspects. Urbanization so urbanization does include a variety of aspects of our social life by which a person urbanize themselves by acquiring different urban characteristics. Then urbanization and level of urbanization. Urbanization बुझिला हमने वर्तमान level of urbanization. Level means the स्तर. Urbanization स्तर. Urbanization सबुडी तो urbanization अच्छी. In India रे हमें कोई परिवार कटक गोटे urban center इडी भी urbanization अच्छी. केंद्रापड़ा भी urbanization अच्छी. सालेपुर मध्य urbanization अच्छी. At the same time भुवनेश्वर मध्य urbanization अच्छी. सबती दिल्ली मध्य urbanization.
But these urbanization found in Salepur, found in Cuttack, found in Bhubaneswar, and found in Delhi are not at the same level. So this is a variation in the level of urbanization. Then सेटा को कहूँ हमें level of urbanization. That is, different towns are at the different levels of urbanization. So it is defined as in terms of proportion of urban population to total population. The minimum first thing that we define a level of urbanization is with regard to the size of population. So when population of an urban area is defined in accordance with the total population of the state. The population of an urban area going on increasing in accordance with the total population of the state. आमे ताकू सेटा रु मध्य मोडे आमे level of urbanization जानि परिया. In terms of population, proportion of urban population to the total population. सेटा को आमे से थ्रू आमे जानि परिया level of urbanization. गोटे urban अंचल रो शहर लोक संख्या यदि शहर बा देशर समुदाय जनसंख्या बा गोटे राज्यर समुदाय जनसंख्या केते परसेंट से अर्बन अंचल रे बास करू से थ्रू आमे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जानि पारे. और इन अदर वर्ड्स एटा मध्ये रेफर करे काकू द डेंसिटी ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन दैट एरिया. गोटे निर्दिष्ट अर्बन अंचल रो बा शहरी अंचल रो जेतेबेले घनत्व जनसंख्या रो घनत्व देश बा राज्य तुलना रे अधिक वृद्धि पाई जाए सेटा को मध्ये आमे गोटे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बोली कहि पारे. then ए जो this measure urbanization is जो measure of population measure taku great value to the human and social dimension of urbanization. well एटा ए जो population size ता एटा तार social आउ dimension को मध्ये human and social dimension को मध्ये प्रभावित करे. केमति social dimension को प्रभावित करे ना जदी population increase करिवो सेटा ही साइन करिवो तार जहरीकरण रो को लेवल ले गोटे शहर अछि. एवं जदि से मानकर सोशल डायमेंशन ता अर्बनाइजेशन न बढ़िबो काना पीपल इफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस देन देयर विल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरैक्शन विल आल्सो इंक्रीजेस. लोक मानक भितरे अंतक्रिया बढ़िबो डिपेंडेंसी बढ़िबो एवं से जो डिपेंडेंसी बढ़िबो बा अंतक्रिया बढ़िबो से अंतक्रिया गोटे लेस सोशल अंतक्रिया हो. जेमति हमें गाँव प्राइमरी ग्रुप जो अंतक्रिया सोशल इंटरैक्शन जो इंटेंसिटी देखुचे से इंटेंसिटी लैक हो गोटे आयाराम गयाराम टाइप ऑफ इंटरैक्शन हम एवं से दैट विल मार्क एज ए मेजर दैट इज आल्सो ए मेजर सेटा गोटे सोशल डायमेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन बोली हमें कहि परिबा. सो द सेकंड मेजर ऑफ अर्बनाइजेशन is concerned with the distance of a rural area to the urban area. Urban level of urbanization को मापिबार द्वितीय मेजर बा परिमापक होउची जे distance केते how much type of distance that a rural area have with the urban area. गोटे rural ग्रामांचल रु urban अंचल को दूरत्व केते यदि distance is more, then level of urbanization is less. If distance is less, then level of urbanization is high. जेतेबेले गोटे शहर ग्राम अंचल ठारू प्रत्येक गोटे राज्यर जेकोसी ग्रामांचल ठारू यदि नियर बाय शहर रा दूरत्वटा अधिक ताहले लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज लेस. यदि प्रति पाखापाखि गाँ गुड़ा ग्राम राज्य रे बा देश रे थिबा गाँ गुड़िकर अल्प डिस्टेंस रे शहर रा एक्सेस अछि बा अर्बन अंचल रा एक्सेस अछि ताहले हमको धरिया पड़िबो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज हायर. सेही अंचल रा अर्बनाइजेशन स्तरटा अधिक अछि बोली हमको जाना. ए दुईटा मेजर रे गोटे होची पॉपुलेशन मेजर आ गोटे होची सोशल डायमेंशन मेजर आ गोटे होची जोडा हमर डिस्टेंस मेजर. ए तीनटा मेजर रे आमे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जाति करियो है ना. एगराला गोटे हला पॉपुलेशन से पॉपुलेशन साइज सहित सोशल डायमेंशन का जड़ित तबे जाहौ ए तीनटा मेजर पॉपुलेशन साइज सोशल डायमेंशन आ डिस्टेंस
फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर यही तीनटा मेजर बेसिस रे आमे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मापी परिबा clear. Then now we'll discuss about the urban growth trend in India. Urban growth kemti urban, you know that India is one of the ancient civilization in the world, so the first urban center also exists here in India prior to 2600 BC. आज तो 2500 ख्रीष्टपूर्व पूर्व मध्य भारत रे सहर कॉन्सेप्ट का थिला सहर संप्रदाय अवस्थित थिला क्यों आमे कहतिला हरप्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता सो तेडू अर्बन ग्रोथ इज नॉट न्यू इन इंडिया बट व्हाट इज द ट्रेंड्स ऑफ दिस हाउ फार दिस ग्रोथ इज आफ्टर हरप्पा मोहनजोदड़ो देयर इज अ लॉन्ग इयर्स ऑफ साइलेंस तापरे सहराइजेशन सहरांचल किछि विकास हे नतला देन कम 6th century BC की आसला जो उज्जयिनी विकास तापरे आसला परवर्ती समय दिल्ली मद्रास से सब आसिया सो ए भितरे एटा को जदी एटा को मध्ये हम गोटे ट्रेंड बोली की कर परिया दिस इज आल्सो ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो ट्रेंड रो मध्ये डिफरेंट धारा बा जो धारा हमें कहते सॉरी करनर धारा से धाराटा को मध्ये हम विभिन्न डायरेक्शन रे विचार करि पाइबा तो कैन assume it from different dimensions है ना केना गोटे यदि हमें इकोनॉमिक ट्रेंड देखिबा गोटे सोशल ट्रेंड देखिबा गोटे कल्चरल ट्रेंड देखिबा ए सब धारा को मध्ये हमें कल्चरल ट्रेंड सोशल ट्रेंड ए सब ट्रेंड हिसाब रे मध्ये हमें अर्बन ग्रोथ को विचार करि पाए तो एक सो अर्बनाइजेशन इंडिया's urbanization level would be considered as low in case of world urbanization process but the pace of urbanization gained momentum in post independence area जदि हमें पृथ्वी रो अर्बनाइजेशन ट्रेंड संगे भारत रो अर्बनाइजेशन को विचार करिया तुलना करिया ताला हम जानिबा जे भारत रो जनसंख्या का एक शहरीकरण रो धारा रो ट्रेंड के लो अछि माने विश्व शहरीकरण धारा तुलना रे किंतु जदि हमें तार पेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आउ पेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर गोटे डिफरेंस पेस माने गोटे केते क्विक स्टेप रे ऑर्गेनाइजेशन रा चिरा स्प्रेड को तेनु द पेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इन इंडिया इज हायर आफ्टर इंडिपेंडेंस but the level of urbanization of India is lower than the world average. World average karu India so there is a difference between level and the pace of organization. So pace of organization कहले हमें बुझिछु जे केते शीघ्र एटा मोमेंटम नउछि केते शीघ्र अर्बनाइजेशन ता भारत रे स्प्रेड होछि सेटा कोन पेस को किंतु लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहले अर्बनाइजेशन शहरीकरण रो जो विभिन्न स्तर अछि को स्तर रे अछि सेटा को लेवल और pace so there is a difference between pace and so during 90s about 45% world population was living in urban areas 1990 बेलू पृथ्वी जनसंख्या रा प्राय 45% of world population were living in urban areas किंतु एठी ए सब देश गुडा करे वर्ल्ड रो सब देश गुडा करे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वर्क इक्वल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का समान नहे सो दैट्स व्हाई बट एट द सेम टाइम से समय रे भारत रे जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस सेटा ताटू बहु कम एबे पर्यंत मध्य ए जो लेटेस्ट बाय हमें 30% को टच करि पारि न दैट मींस इन इंडिया less than 30% of people are living total Indian population are living in urban areas वर्तमान सुधा भारत रो समुदाय जनसंख्या रो मात्र 30% रो मध्ये कम लोक सहरांचल रे बास करन तेनु वर्ल्ड तुलना रे हमर वर्ल्ड रे 90 रे 45 थिले वर्तमान 90 बेलु तो हमर बोधे थिला 25-26% of urban population तेनु हमें we are 20 at about 20% behind and lagged behind from the world population level that is at Indian level of urbanization area of course there are certain cities who are at the higher level of urbanization केतटा भारत रा अल्प केतटा शहर छाड़ दिल्ली कलकत्ता इसु केतटा शहर को छाड़ देले
बाकी ऑल इंडिया एवरेज दृष्टि our level of organization is very low in comparison to the world population level. So that is what is the point of it. Then we can we have to depend on statistics. How far this urban train has been moving in India. Annual growth rate kemti hochi. So this annual growth rate urban population no India re kete hochi. So at the time of beginning of the century, 19th century, in India, we have only 10%, at about 11% population, our total population are only living in urban area. 1901 बेलू मात्र 10.84 लोक समुदाय जनसंख्यार एठी बास करते कोडी अर्बन अंचल रे किंतु 1951 बेलू आफ्टर जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस it has raised to 17% to 9. That means within this 50 years, our pace of urbanization has only 10 to 17 को move कला कारण मात्र 50 वर्ष रे हमारा 7% urban population growth कला another 50 years 51 आम हिसाब करते 2001 रे जब आम हिसाब करवा ताले सेठी हमर पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन केतेला ना 27.78 at approximately 28% of total Indian population are living in urban areas. तेनो एटी annual growth rate also हमारा world average तारू बहुत लो हमारा annual average 2.73 2001 ठारू थिला. सो ए जो लेटेस्ट 2011 रे सेटा 30% क्रॉस करछि ओनली इट हैज क्रॉस्ड जस्ट 30% क्रॉस करछि तेनो हमें कहि परिया ओनली 30% ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर नाउ लिविंग इन अर्बन एरिया. तेनो एटा थिला हमारा द ट्रेंड्स ऑफ अर्बन ग्रोथ इन इंडिया. हमारा जो अर्बन ग्रोथ आउ सेमती सिमिलरली अर्बन ग्रोथ को हमें खाली पॉपुलेशन दृष्टि देखले हबनी केते लोक टाउन में बास करछन्ती व्हाट इज द नंबर ऑफ टाउन number of cities in India that is also shows the growth of urbanization. जदि आम देश रे शहर संख्या बढ़िला सेटा मध्ये गोटे सेटा को हम अर्बनाइजेशन बोली कहू अर्बनाइजेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन इंक्रीज करू. जदि शहर संख्या हमर बढ़ुनी खाली शहर जनसंख्या बढ़ुची ताहले एटा गोटे सुस्थ अर्बनाइजेशन प्रक्रिया न हो कारण आम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पूरी लोरे खसी जे तळु खसी जा. जदि देयर विल बी मोर रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज then our level of organization will be higher. तेणु आमर 1901 बेलू भारत रे ओनली मात्र 1827 टाउन थिला 1901 रे 1951 को एटा केते हे गला 1951 को एटा 2843 रे पहुंचला. रेट ऑफ ग्रोथ एते बेसी नुई मात्र 1000 पाखापाखि 1000 रुट के अधिक ग्रोथ हैला 50 वर्ष रे. सो 2001 रे हमर टाउन संख्या केते 4368 डबल भी हेलानी यदि 51 ने हमर 2800 थिला ताले एटा 5600 मिनिमम होइतांता 50 वर्ष रे यदि ग्रोथ एना टाउन संख्या पड़तांता बट दिए पुनी से 50 वर्ष रे हम डबल मते करि पारलु नै हमर 5000 तळे रहि गला 4368 नंबर ऑफ टाउन्स रहि गला इंडिया रे. तेनु एठी द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज कंपेयर्ड विथ दिस दैट इज the number of cities, number of population bhitere हम देखले तापर number of cities bhitere मध्ये देखले. So this is what the trends of urbanization or urban growth in India. So another there is a noted scholars named Kundu has identified 4 components of the growth of urban population. Urban population जो growth होची India रे particularly तार 4टी component कथा से कहते एक कौन जो नेचुरल इंक्रीज गोटे प्राकृतिक वृद्धि केते ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स आउटसाइड एग्लोमरेशन अर्बन एग्लोमरेशन बाहर केते नुवा टाउन बढी होची. मर्जिंग ऑफ टाउन्स एंड जुरिडिक्शनल चेंजेस इन एग्लोमरेशन मर्जिंग टाउन सहित केते गोटे छोट छोट शहर बा एग्लोमरेशन गुडा मिसी जाउची
then rural urban migration. ए चारिटा होची urban population growth रा गोटे यदि rural urban migration अधिक हबो ताले urban growth हबो यदि natural increase हबो जनसंख्या प्राकृतिक भाबे बढ़िला शहर अंचल तारि गणपति हबो आ कोन हबो ना growth of new towns outside agglomeration और अधिक टाउन जदि ग्रोथ हला तानो दरवेशन ग्रोथ हबो कम एटा मध्ये गोटे अर्बन पॉपुलेशन इंडिया रहइबो आ गोटे हबो कोन ना जदि मर्जिंग ऑफ टाउन्स एंड जुडिशनल चेंजेस डिफरेंट टाउन गुडा छोड़ जदि कटक भुवनेश्वर मिसी जीवो गोटे हम कहूचे ट्विन सिटी सो एटा मध्ये हेले अर्बनाइजेशन लेवल बढ़ी जीवो आर अर्बनाइजेशन लेवल बढ़िबो आवर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ी जीवो हमर अर्बन पॉपुलेशन भी ग्रोथ हे जीवो हमर भुवनेश्वर रे 15 लाख लोक कटक रे 12 लाख यदि दुटा को मिसी जीवो गोटे टाउन हे जीवो जॉइन हे जीवो ताले हम अर्बन ग्रोथ हे जीवो ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हे जीवो पॉपुलेशन गोटे सिटी हे जीवो भुवनेश्वर बा कटक का ना जा दिया जीवो तार पॉपुलेशन हे जीवो मोर देन at about 30 लाख सो इटा ताले इटा गोटे लेवल ऑफ सिटी रो इटा गोटे लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ सिटी को पळेबो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मध्ये बढ़ी जीवो पेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अर्बनाइजेशन मध्ये बढ़िबो सो दिस इज हाउ द ट्रेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया then classification of towns by size of differential trend in organization टाउन गुडा को हमें आगु टाउन क्लासिफिकेशन पढ़िथिले जे क्लास 1 थ्रू क्लास 6 पर्यंत जे 6टा क्लास 1 सिटी क्लास 2 सिटी क्लास 3 सिटी क्लास 4 सिटी क्लास 5 सिटी क्लास 6 6 प्रकार सिटी अछि 6 प्रकार सिटी ले 6 सबटु 6 नंबर सिटी रो जनसंख्या केते 5000 कम 5 नंबर रो केते ना 5000 10000 भितरे 4 नंबर सिटी केते ना 10000 20000 भितरे 3 नंबर सिटी केते ना 20000 50000 भितरे एवं 2 नंबर केते ना 50 रु लखे एवं 1 नंबर केते ना लखे रु इटा हला छोटा प्रकार सिटी तो ए जो सिटी गुडा को हमें ये करि परिबा जे केते ए सिटी रो क्लास 1 सिटी क्लास 2 सिटी क्लास 3 पर हमरा केते लेखा अछि हाउ मेनी मोर ए सिटी रो इंडिया रे केते केते संख्यक शहर मन एति अछि जदि 1951 ठार देखि जिबा 1951 रे हमर क्लास 1 थी शहर थिला भारत रे 76 टा क्लास 2 थिला 91 टा क्लास 3 थिला 327 टा क्लास 4 थिला 608 टा एवं क्लास 5 थिला 1024 टा एवं क्लास 6 थिला 500 बट इटा 2001 बेलकु इटा क्लास 1 सिटी रे बहुत वृद्धि होती थिला क्लास 1 76 थिला 51 रे एटा वर्तमान 313 लेवल पहुंची गला 2001 रे एवं जेते बेले क्लास 2 सिटी का 91 थिला सेटा वर्तमान 401 को हे गला एवं जोडा 327 थिला क्लास 3 सिटी सेटा 1151 हे गला सो दिस वाज द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट सिटीज अर्बन cities and different trend of urbanization. Then interstate variation of urbanization. Urbanization or interstate variation. State urbanization is a worldwide process, but at the same time, urbanization is a localized process. तेणु सेटा को मध्य हमें तेणु interstate variation of the pace and level of urbanization is not uniform everywhere. So that's why there is a variation from state to state, from area to area, from country to country. There is a देखा जाए तो हमें interstate variation कहले गोटे state भितरे केमती urbanization process ता differ करूछ सेटा को हमें interstate variation बोली कहैताउ. The forces of urbanization are uniquely distributed the level and pattern of urbanization in the state or in the so forces of urbanization are unequally distributed. Forces of urbanization na jo forces सब अछि and the pattern of urbanization in the state it is परस्पर ठारू differ. The census 2001 reveals that the states that are economically developed are experiencing higher rate of urbanization. जो देश रे
जो सहर बा जो राज्यर इकोनॉमिक कंडीशन बेटर सेठी अर्बनाइजेशन स्प्रेड अधिका सेंसस रिपोर्ट को 2013 सेंसस रिपोर्ट दैट कहीं ना अर्बनाइजेशन का कहीं बढ़े ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ इनकम when the people migrate करन दे दिटा कारण रूरल एरिया अर्बन एक एम्प्लॉयमेंट सर्च पाई और एजुकेशन ए सब जिन साकवर पाई दूरे आ कोन ना कोइने रूरल लाइट बिकेम ए रिच मैन गोटे रूरल ग्राम्य लोक जितले कोनसी कोन धनी लोक ही धनी ही जीवो से कोन करबो ही विल मूव टू अर्बन एरिया टू बाय गुड ह्यूज प्लॉट इन अर्बन एरिया बिल्ड हाउसेस एंड डिसाइड दैट सो ए जो शिफ्ट ए ट्रेड एटा को मध्य हम मेजर करि पारेगा एवं सेही मेजर बेसिस रे हम इंटरस्टेट रे केते वेरिएशन होती ताको विचार करि पारेगा सो सेटा को हम इंटरस्टेट वेरिएशन बोली करते सो स्टेट भितरे केते वेरिएशन होची इशू सारे सेटा को हम मेजर The census 2001 reveals that the states that are economically developed are experiencing higher rate of urbanization than the less developed states. State थारु सेटा अधिक परिमाण रे तार ये पड़छ केमदी ना हमर इंडियन सेंसस has listed here to 6 states 6 states that is Gujarat, Maharashtra, Punjab, West Bengal, then Karnataka, Tamil Nadu, ये जो 6 राज्य they together constitute a major urban population of the country. भारतर शहरी जनसंख्यार एक बृहत भाग यही 4टा स्टेट रा पास कर एक कहीं अर्बन पॉपुलेशन बढ़ुची बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्री स्टेट से माने इकोनॉमिकली एडवांस हेतिबारु सेठी लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज आल्सो हायर तेणु आमर जेते अर्बन पॉपुलेशन भारत रे अछि जो 30% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन आर अर्बन एरिया भारत जनसंख्यार 30% कारण आम जनसंख्या 100 कोटी तार 30% बा 30 कोटी लोक आमर सहर रे बास करछथि टोटल अर्बन रे बास करछथि किंतु तार 50% मात्र एई 6टा स्टेट रे अछि जो पंजाब गुजरात महाराष्ट्र ये हमर वेस्ट बेंगल एगुडा करे ई 6टा स्टेट रे पाखापाखि मेजर पॉपुलेशन दैट इज 50% of our urban population हमर जेते शहरी जनसंख्या अछि तार आधादी शहरी जनसंख्या केवल 6टा स्टेट रे देखा जाइथन तेना हमें थ्रू कोन अनुमान करिया द इंटरस्टेट वेरिएशन इज वेरी हाई इन दैट टू अर्बनाइजेशन तेना अर्बनाइजेशन नै कि हमर इंटरस्टेट वेरिएशन बहुत अछि तेना से दृष्टि रु हमें स्टेट गुडी को हमें 4टी कैटेगरी रे विभक्त करा जाई पारे है ना से लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन नै कि हमें गोटे कोइला ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ए तीनटा से ग्रुप आ ओडिसा आसुजी को करे ना हमर अस्ति ग्रुप सी रे काहेकि ना एतर आर जनसंख्या बा अर्बन टोटल पॉपुलेशन शहर जनसंख्या समुदाय जनसंख्या हिसाब रे शहर जनसंख्या वृद्धि आर मात्र 14% समथिंग at about 15% है ना तेणु एटा ग्रुप सी रे आसी ग्रुप कैटेगरी 3 नंबर कैटेगरी रे आसी ओडिसा काहेकि परसेंटेज पॉपुलेशन ओडिसा आर population urban population in Odisha are less in comparison to other states urban population. ग्रुप ए रे कमन आछंती न जो कहितली दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र वेस्ट बेंगल तमिलनाडु एमान सब आछंती ग्रुप ए रे ग्रुप बी रे कमन आछंती आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर झारखंड मध्य प्रदेश केरला राजस्थान उत्तर प्रदेश एगुडा सब आछंती ग्रुप बी रे ग्रुप सी रे आसिले आसाम बिहार हिमाचल प्रदेश मेघालय नागालैंड ओडिशा एमन सब आछंती एटा गला हमरो अर्बन
इंटरस्टेट वेरिएशन अर्बन एरिया ए जो इंटरस्टेट वेरिएशन न सेठी मध्ये ट्रेंड से मध्ये भिन्न केतेबेले कोडी परसेंटेज हाई हे होची केतेबेले कोडी परसेंटेज ऑफ लो हे होची स्लोइंग डाउन रेट ऑफ अर्बनाइजेशन स्लो हे होची ए सब तापरे हमें कहि परबा वेस्ट बंगाल मॉडल तो वेस्ट बंगाल टा गोटे मॉडल भाई काई नै होची ना वेस्ट बंगाल टा होची हमरा गोटे डेवलप वेस्ट बंगाल होची गोटे हमरा डेवलप स्टेट कांगी ना एडी West Bengal is a economically and socially developed, marked by huge regional disparities. West Bengal concentration of resources. Then West Bengal Paschim Bengal urbanization process is higher. Kahinki higher? Na ara higher haba pachare karan hochi je kete gude karan jogu West Bengal le hochi. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ता हाई अछि कांगी ना यार कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस जो देश रे जो राज्य रे नेचुरल रिसोर्सेस कंसंट्रेशन अधिक हबो एटी अर्बनाइजेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशन अधिक हबो एला गोटे गात्रा तापरे हिस्टोरिसिटी ऑफ द रीजन गोटे अंचल रो जो ऐतिहासिक गभीरता अछि ऐतिहासिक तीव्रता अछि तारे सेटा रे अधिक लोक आदिवासी करे कि अर्बन पॉपुलेशन ग्रो हो हिस्टोरिसिटी ऐतिहासिक शहर आमे जे कटक ऐतिहासिक शहर तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिफर कटक even than to Bhubaneswar. So then another factor is the proximity to the international border, cross border migration, labor agriculture industrial development ये सब factor determine करिछि गोटे स्टेट रा प्रगति पाई गोटे स्टेट का whether it is developed or not that depend on this factor. तेणु लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक गोटे रीजन रा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्तर को एटा प्रभावित करे. These factors are influencing the level of urbanization. एगुड़ा सब मेजर फैक्टर that influence करा. West Bengal which has a higher urban growth even than India. West Bengal होची गोटे राज्य जहार अधिक हायर ग्रोथ रेट अछि इवन भारत ठारू मध्ये. भारत रो रेट ऑफ अर्बन ग्रोथ जति कि वेस्ट बेंगल अर्बन ग्रोथ स्टार्ट हो इटा काई होची ना वेस्ट बेंगल इंडिया रो ग्रोथ रेट होची केते अर्बन ग्रोथ रेट पर डिकेड 25.71 whereas the West Bengal रो होची 27.40. अच्छा आ गोटे कोन किंतु वेस्ट बेंगल आ गोटे मार्क फीचर होची वेस्ट बेंगल अर्बनाइजेशन ता केवल सिटी सेंट्रिक एंड वेस्ट बेंगल ले बड़ बड़ शहर बेसी नहीं. कलकत्ता इज द मेन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी ऑफ and you know at about to 1970 the 70% of West Bengal total population are living in Calcutta only. West Bengal ले 1970 वर्ष बेले को जेते टोटल अर्बन पॉपुलेशन थिले तार 70% पॉपुलेशन बास करथिले कोडी हां कलकत्ता रे केवल. अवश्य परवर्ती समय रे सेडा कमी जाईछि तो 58% जाईछि वर्तमान मध्य ता हाईएस्ट अछि. गोटे स्टेट पॉपुलेशन में 58% लोक केवल गोटे शहर रे बास करिवे सेटा मध्य गोटे कम पड़ने कथा. 58% of population are living in Calcutta of the total population. So that's why West Bengal is considered as an important model of before the other countries. तेणु गोटे बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन केमती ही परियो संतुलित शहरीकरण केमती ही परियो सेति पई वेस्ट बेंगल स्टेट केते गुडे स्टेप नै छथि जे रूरल एरिया डेवलप करेवा तेणु ग्राम आउ रूरल जो माइग्रेशन को अटकाइबा बाय अवेलिंग फैसिलिटीज फ्रॉम अर्बन एरिया रूरल एरिया रे विभिन्न प्रकार रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ये सब रो विकास करेवा ये सब जदि करा जाई परिबो ताले एटा अभी उन्नति ही परिबो.
बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन संभव हो पारिबो संतुलित शहरीकरण संभव हो पारिबो देन हमें पढ़िबा द चेंजिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट मार्केट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन अर्बनाइजेशन अच्छा अर्बन एम्प्लॉयमेंट मार्केट एम्प्लॉयमेंट माने हम व्हाट डू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट कहले हम कोन नियुक्ति हम का कहबा employment refers to when an capable or able-bodied person is able to find a job as per his capacity and qualification, we call it as employment. जेतेबेले जने सक्षम व्यक्ति तार सक्षमता भितिरे किसी कार्य खोजी पाए सेटा को हमें एम्प्लॉयमेंट बा नियुक्ति बोली कहू तेणु अर्बनाइजेशन एज ए प्रोसेस has greatly influences the employment of a city or of a country. So changing urban no जो change होची urban employment market urban रे जो employment मिलुची कांगी urban rural urban migration होची because of the availability of employment, more availability of employment in urban area. And urban area रे अधिक employment का नियुक्ति सुजोग अच्छी रहती बारू सेटिकी migration होती. तेरु ये जो urban employment तेरु सेटि पाई urban को एक employment market हिसाब से क्वालिफाई करना. And if you come to urban area, you find a host of opportunity of employment, either in service sector, business sector, or any other allied sectors. Huge market of employment are existing. But these employment markets are gradually changing. These market are changing urban employment market. एवं जब ये जो urban employment market change होची, तार मध्य शहरीकरण ऊपर विभिन्न प्रभाव होची. It has its impact on the process of urbanization. Urbanization ऊपर तार केतेक impact होची. So the कौन होची impact एवं market कौन हमें कहू पहिला. Market होची गोटे place where the consumers power exists for the purpose of buying and selling. किनिबार प्रक्रिया जोटी संगठित हुए एवं बेटिवा प्रक्रिया केंद्र प्रत्येक संगठित କରିବା ପାଇଁ जोटी उपस्थित थांती को माने the buyer and seller होए सेही भली एक सिचुएशन को हमें मार्केट बोली कहू होला तेरो चेंजिंग ऑर्डर एम्प्लॉयमेंट मार्केट previously urban area was the center of employment opportunities and there was the concentration of industrial commercial development activities अच्छी आ विभिन्न प्रकार opportunity अच्छी ए सब जिंस जो एटा को हमें गोटे एम्प्लॉयमेंट मार्केट बोली कहू urban area is a market of employment and earning opportunity which not only sustain the urban workforce but the additional workforce. तेणु ये जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट टाइप हम जे आम आर भर लोक सहर भर लोक एडिशनल फोर्स किसी आसीजे जो मान को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे. The recent changes in the urban job market have been reflected in the decline of the urban growth, particularly the falling rate growth of the large cities. तेणु urbanization टा होची गोटे recent change जो होची urban job market रे have been reflected to the decline in the urban growth. Urban growth रे the decline पर हासो. तेणु जदि मार्केट रे एम्प्लॉयमेंट मार्केट रे चेंज हबो ताहले सेटा मध्ये हमर अफेक्ट करिवो. National Sample Survey Organization once reported a steady decline in the share of regular and salaried work during this period. Urban area रे वर्तमान salaried service आउ industrial services रे मध्ये पतन होतिला जॉब रे जेमति हमर ड्यूरिंग कोरोना देयर इज ए शार्प डिक्लाइन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रे बहुत हेची ताले सेटा मध्ये गोटे असुविधा कथा. तेणु एम्प्लॉयमेंट रे जो ह्रास घटुची एवं एम्प्लॉयमेंट जितले ह्रास घटुची rate of rural urban migration is declining.
जदि एम्प्लॉयमेंट रे गाँव रे शहर रे एम्प्लॉयमेंट आरंभ होबनी ताल रूरल अर्बन लोक माइग्रेट करिवे कि करिवेनी ह्रास पाइबो तो रूरल अर्बन माइग्रेशन ह्रास पाइबो तेणु ये जो चेंजिंग पैटर्न टा तेणु दैट इज इंपोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट मार्केट रे जो चेंज होची सेटा हमर ऑर्गेनाइजेशन ऊपर ମଧ୍ୟ प्रभाव पड़ुची तापर we will deal with the marriage family and kinship marriage family and kinship the impact of organization on marriage family and kinship so organization the impact to assess the impact of organization on social institution ऊपर हम केमती आलोचना कर पाइबा ऑर्गेनाइजेशन कहि देली जानछि ऑर्गेनाइजेशन कोन इट इज ए प्रोसेस ऑफ acquiring urban more and more urban characteristics or behaving like that so organization marriage family and kinship कहले कोन these are the different social institutions यहाँ के social institution social institution काहे नहीं social institutions are created in society to fulfill the needs of human beings मनुष्यर आवश्यकता को पूर्ण करने ପାଇଁ social institution सब क्रिएट तो ये जो social institution it is a social institution like marriage family these are the social institution these are created to fulfill the needs of individual social institution have been defined करे हमें तो कोई बाइबा ये जो नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन सोसाइटी सोशल इंस्टीट्यूशन कोन इट इज ए कांग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन सोसाइटी समाज रे सामाजिक संपर्क रो नेटवर्क रो एक व्यवस्था भाबे हमें सोशल इंस्टीट्यूशन को देखि दाओ है ना एवं सोशल इंस्टीट्यूशन गुडा को साधारणतः परमानेंट यू मे स्पीक्स अबाउट फैमिली मैरिज किनशिप एडा तो खूब कार्ड मानव सभ्यता आरंभ समय रो फैमिली अछि मैरिज अछि सोशल इंस्टीट्यूशन इस एग्जिस्ट करै तो एगुडा का परमानेंट इन नेचर एंड द सोशल रिलेशन एज ए होल network of social action the institution exists only so far as people engage in network of social action लोक माने तळे नेटवर्क ऑफ सोशल एक्शन जे छंदी हेबे ताले सोशल इंस्टीट्यूशन तिष्ठि रहयो or the impact of organization on social change in India social change उपरे organization no कोन impact रहउची impact of organization on social change in India so social change का हमें का को बुझी social change refers to those kind of changes that occur in the lifestyle life pattern life opportunities of people लोक मानकर lifestyle life chances life opportunity ए सब रे जो परिवर्तन घटिला ताकू हमें कोन अर्बन सोशल चेंज बोली कहला तेणु ये जो इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सोशल चेंज तेणु ऑर्गेनाइजेशन होची कोन ना गोटे स्ट्रक्चरल प्रोसेस ऑफ चेंज ऑर्गेनाइजेशन ने गोटे स्ट्रक्चरल चेंज होची एंड न्यू स्ट्रक्चर गोटे आसी तार स्ट्रक्चरल चेंज होची सोसाइटी रो व्हिच एसोसिएटेड द मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया तेणु ये जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस एडी कोन होची ना रूरल रो अर्बन एरिया को लोक मानकर माइग्रेशन होची ए माइग्रेशन माध्यम रे ऑर्गेनाइजेशन तारे गोटे process structural process का परिवर्तन न होची it is related to an industrialization but it is not always the result of industrialization organization का industrialization जगु organization होय कि सब बेले जे industrialization रा result हबो organization सेमति कि कहि बने there is no such clarity तबे this Urbanization social change रे विभिन्न प्रकार impact पकाए urbanization decides the speed of social change the rate of social change एक मतलब urbanization किने करिवो यदि urbanization हबो त rate and speed of social change higher हबो तो ए जो change हबो higher change हबो you know urbanization ଗୋଟେ important force of social change in
तेणु जिते सोशल चेंज रा फैक्टर्स अच्छी ता संगे अर्बनाइजेशन मध्य गोटे फैक्टर ता प्रोसेस अच्छी कारण अर्बनाइजेशन जो अनेक प्रकार चेंज देखा दी structural, functional, legal, and many other changes are occurring in society due to urbanization. कहीं अर्बनाइजेशन घटिले सामाजिक चेंज परिवर्तन रहा समाज समस्त दिग को या प्रभावित करे इट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सब दिग को प्रभावित करे तेणु अर्बनाइजेशन सोशल चेंज आने बाय चेंजिंग द सोसाइटी बाय चेंजिंग द बोथ स्ट्रक्चरल चेंज एंड द फंक्शनल चेंज ऑफ द सोसाइटी तेणु सोशल चेंज केमती आने अर्बनाइजेशन ना आर सोशल स्ट्रक्चर चेंज करी एवं तार इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करी परिवर्तन आने देन हमें कहि परिया हाउ दिस सोशल चेंज अर्बनाइजेशन अफेक्ट सोशल चेंज पहले हमें कोन सोशल चेंज आनिमो सोशल इंस्टीट्यूशन प्रभावित करिवो का को सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज को इन्फ्लुएंस करिवो तो अर्बनाइजेशन फल रे मैरिज रे कोन चेंज होउची नंबर ऑफ चेंजेस आर अकर होउची मैरिज रे अर्बनाइजेशन जो मैरिज इंस्टीट्यूशन में कौन चेंज होउची फर्स्टली इट अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ मैरिज सिलेक्शन में अर्बनाइजेशन जो सिलेक्शन ऑफ मैरिज रे पेरेंटल कंट्रोल डिक्लाइन करूची एवं इंडिविजुअल चॉइस रो बा फ्रीडम रो गुरुत्व होउची एटा का जो अर्बनाइजेशन होउची रूरल एरिया रे द पेरेंटल कंट्रोल ऑन मैरिज इज फुली parent decision are boys or girls decision they are bound to accept the parental decision most of the cases in the urban area re it is shifting father's parental role is declining how kon hochi na the love marriage increases arranged marriage declines how kon hochi na there is a changes in the ritual aspect of marriage रो जो ritual aspects थिला होम जो सब थिला जो तासे जो विधि सब जड़ित होला rites ritual associated with marriage there is a lot of change are occurring in the rites and the rituals of marriage rites and rituals of marriage रे number of changes ako hoji and there are some changes also occurred in the functions of marriage रो जो function तो क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन है aims of marriage रो मध्य चेंज in traditional society hindu marriage रे हमरो एम थिला कनो धर्म प्रजा रति ये सब थिला हमरो मैरिज किंतु वर्तमान ऑर्गेनाइजेशन जो हमरो चेंज होची aims of marriage रे the expenditure of marriage has become more heavier organization now जो marriage था हमारा गोटे पिला और जो social function of the family near dear now it is become it is observed in a pomp and grandeur and there is a change होची तो ना show बाजी होची it became people are showing one's wealth and affluence are also reflect on marriage. The marriage as an institution open up new avenues of employment earnings like establishment of mandapas mandap ro jo mandap hoyi jauchi so mandap are also increasing mandap बढ़िया कारण कोन this marriage urbanization सेटा गुटे impact तेना हमें सब आ घरे टेंट इशू मैरिज करी और marriage hotel marriage बहुची price of marriage expenditure on marriage increases so that leads to an impact of parental or income rate that leads to corruption सेटा मध्ये corruption को encourage करती यदि लोक मानकर मैरिज रे बहुत खर्च हबो ताले झियर बापा जी करबा এবং पुरा बा से माने करप्शन होरे करबे कैनल से मैरिज कर परबनी और जदि करप्शन न करी ताले लोन करिवे यदि लोन करिवे ताले सेटा मध्ये तंकर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को अफेक्ट करिवो एवं दैट विल a circle like a circle it will create a number of problems in society so marriage रे urbanization जो एते प्रकार चेंज similarly in family so urbanization has also greatly influences our family it in fact affect the size of the family
जॉइंट फैमिली का ट्रांसफर है न्यूक्लियर फैमिली को ऑर्गेनाइजेशन जो कहना रुरल पीपल गाँव रे मूल परिवार रहा से न्यूक्लियर फैमिली की पड़े आसते गाँ सहर से गोटे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ फैमिली रे मतलब चेंज हो स्ट्रक्चरल चेंज होनी फंक्शनल चेंज होती फैमिली जो सब फंक्शन प्ले करता है इन ट्रेडिशनल विलेज सोसाइटी इन अर्बन सोसाइटी द सेम फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म बाय द फैमिली हमें द्वारा से परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म ही करना ही से परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म ही करू नहीं तेणु से चेंज आणुची फैमिली फैमिली तेणु स्ट्रक्चर फंक्शन में चेंज होची नंबर ऑफ न्यू रोल्स आर नाउ अलॉटेड विथ द फैमिली फैमिली ऊपर आउ गोटे नुआ नूतन भूमिका संपादन करे बसिलानी न्यू रोल्स हैव बीन परफॉर्म बाय फैमिली ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन तापरे फैमिली रे कंट्रोल फैमिली ऊपर जो कंट्रोल थिला सेटा मध्ये डिक्लाइन करूची इन ऑर्गेनाइजेशन जो a number of changes in occurred in the family also role of family तापरे आगुडे कोन हला रोल रे मध्ये हस्बैंड वाइफ जेतले एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड यूज इन द अर्बन एरिया रे उभय एम्प्लॉयमेंट हो पले it affects the child similarly it also broken family number of broken family increases urbanization जो family diverse number of diverse legal dissolution of marriage legal dissolution of children's family dissolution family break करिबा ए सब मध्ये रे अनेक परिवर्तन आसुछि तेनु urbanization influences our family life रे जो शांति थिला that has been developed away सेटारे मध्ये परिवर्तन हेलानी divorce rate increases a number of things are happening to family similarly kinship मध्ये हमें हमरा गुरुत्व हरुछि in urban area kinship is less important nowadays kinship रे अनेक गुडे चेंज होछि ज्ञातित्व जो रोल ऑफ ज्ञाति जो हमर जो प्राइमरी सेकेंडरी किन्स टर्शियरी किन्स होतले हमर जो कंसंगुइनल किनशिप और अफिनल किनशिप थिले समानकर मध्ये रोल स्ट्रक्चर पैटर्न्स रे सब अनेक गुडे परिवर्तन होछि तेणु so urbanization as a process not only affect marriage family but also affect our kinship system the proverbial relations of kinship technonomy eso madhya bartan dekhego milu nahi family however there is a interreligious in the marriage re agon hochi na continuity institution of marriage re one continuity dekha dauchi जो मैरिज सिस्टम में प्लस ये मैरिज सिस्टम भी अच्छी किंतु तादरे चेंज भी आछी आ कोन आछी देयर इज ए इंटर रिलीजियस मैरिज इंटर कास्ट मैरिज ये सब देखा दउची ना गवर्नमेंट आल्सो प्रमोटिंग इंटर कास्ट मैरिज बाय गिविंग फाइनेंशियल हेल्प्स टू दोज हु आर डूइंग और परफॉर्मिंग इंटर कास्ट मैरिज उन कराउची तेनु इंटर कम्युनिटी मैरिज इंटर कास्ट मैरिज इंटर रिलीजियस मैरिज it is also now gote sama thila our inter religious marriage ku pore hardly but now it is a common phenomena that a common phenomena galani seta madhya am common ai so these are the changes that are must and the out of urbanization kon hochi na urbanization gives a new status to women in family village re women manankara status ta very low thila urban center the status of women has been increasing women are also doing all sorts of marketing, household work, and many other things that have increased their status in society. Now, village, the male, the husband is depending more on wife for his household works. These are also happening in urban area. So, concept of amejo thila husbandhood. The husband is supreme in family, but urban area सेटा डिफरेंट पर वाइफहुड a new concept of wifehood now again a wife is playing a vital role in urban family re wife's decision are also important so that's why urbanization increases the status of women in family as well as in society and then I would say that the urbanization
has make us more selfish and individualistic. Organization जो individualistic आमे अधिक ही पड़ुचे व्यक्तिवाद ऊपर अधिक आमर व्यक्तिर इच्छा is more important than the family interest. तेणु आमे व्यक्तिवादी बसी पड़ुचु सेल्फ सेंटर्ड ही जाउचु एटा मध्ये गोटे इम्पैक्ट होउची गवर्नमेंट रे. Another thing, I would think marriage re madhya change gotuchi astuchi kono na age at marriage. Age at marriage is also increasing in urban area. The people are marrying at a very late age, both boys and girls. So in urban area, there are girls are also married after 40s. Most of the girls, so 35 is a common marriage age for boys and girls now in urban areas. So age at marriage rate. So that's why the number of child birth is also reducing. Late marriage child birth reducing. I would change urbanization institutional delivery has number of institutional delivery also increases. Institutional delivery at hospitals. So institutional delivery. So now the institutional delivery are also increasing due to this urbanization. No one prefer to produce children at their home, though it is a natural biological process. Delivery was a natural biological process which happen in our household. Of course, there is certain risk in some cases, but all cases is not risky. But nowadays, almost all cases are institutional. Even in rural areas, the institutional delivery has increased. That is an impact of also urbanization. Then. So these are the changes that has occurred in marriage and institution of kinship rate, continuity change. So these are about the changes in family, marriage, and kinship. Then we'll discuss about the traditional neighborhood and modern cities. Traditional neighborhood and modern cities. So sociology कहाँ पर बेसी गुरुत्व दिए? And the very most important aspect of sociology is that it studies social relations. समाज विज्ञान कौन बेसी अध्ययन करे? यह सामाजिक संपर्क को अध्ययन करे. It विश्लेषण करे. It analyzes the social relations in society among individuals and all this. Individual and family and between various families got prominence in sociological literature. Individual and family, between families, family and society, all these relations are very prominent in the social life is highly in today's social life is highly diversified, and in modern cities and metropolitan cities and other cities, neighborhood is a very associated thing, social institution of our society, human society. Manav Samaj Jugyachi, because human society, but human beings always live in groups. So he lives in groups, only family, next to family. The most immediate social institution that is come in contact is the neighborhood. And neighborhood plays an important role in traditional society. It's a very important role in the life of an individual. So neighborhood कहले हमें कौन बुझू? Neighborhood means people living by our sides, people living close to us. So people living near our place. Neighborhood. So people living and compacting our place. So neighborhood
is within a town or city. Neighborhood कहले the people living within nearby our village, our ita ko ame कहू. In sociological literature, neighborhood is a term used to describe localities in urban areas. In urban area जरा हमें neighborhood कहले कौन बुझू? Our localities, which are characterized by a common sense of identity and usually common lifestyle. Then neighborhood, suppose we the people of a particular city or a particular particular sahi or a particular area, सेटा को हमें कहू, or particular sector of a city, a particular sector, एटा को हमें, so that gives us a common identity. एटा हमको एक common identity दे, and because of that common identity, we are sharing a common lifestyle. हमें एक common lifestyle को share करो. So this is how the neighborhood living. So it is said that in urban areas, the people do not even know the people next door. But however, neighborhood continue to play an important place in everyone's life because it influences our thought, it influences our behavior pattern, it influence करे. Neighborhood is a sub-discipline, community studies, sub-discipline of sociology, covered a long time empirical statistical define neighborhood and community denote the concept of popular planners. Neighborhood और community यदि टा पाखापाखी शब्द प्राय आमे जो community बास करूछु सेही community रा पाखापाखी लोक कोडांगु आमे neighborhood यदि constitute करू. It is the settlement or population living nearby. So neighborhood in sociology, there are certain neighborhood studies are also conducted by certain sociologists. Wellman, Linton, Patmani argued urban sociology tended to be neighborhood sociology. Urban sociology रे हमें कहेंगे से अंदर बड़े-बड़े से Wellman urban sociology को से कहते हैं neighborhood sociology. क्या ना urban sociology कौन स्टडी करे ना individual स्टडी करे तारा क्या कि तारा पड़ोसी की तारा group तारा associated people से समर्थन को अध्ययन करे. तेणु neighborhood study in social geography, neighborhood studies signified an important branch of study of specific localities. Neighborhood study कहले हमें कौन बुझू ना study of specific localities. तेणु urban sociology रे neighborhood studies टा गोटे गुरुत्वपूर्ण. So Chicago School of Urban Sociology रे तारा गोटे neighborhood studies गोटे group मध्य थिले दो जो adaptation adapt करूथिले विभिन्न neighborhood सहित एवं separate neighborhood को एवं निज neighborhood को गोटे distinction करा जाउतला. Our own neighborhood, others neighborhood. So there is a study. Park and Burgess and their followers contributed the theoretical methodological aspect of new urban sociology. ये जो urban sociology new field that neighborhood study सेठी के मतलब Park Burgess कर मध्य अनेक गुड़ी अवदान था. Then neighborhood traditional and modern. Traditional neighborhoods denote old part of the city. पारंपरिक neighborhood कहले हमें city रा old part होते हैं. In many American studies, these parts are referred to as inner city areas. जो हमें कहूचे inner city area जोड़ा शहर रा पुराना inner city पुराना शहर सेठी neighborhood टा टिका अधिक कहना सेठी पुराना लोक माने परस्पर सहित जड़ित रही रहती. तेणु सेठी neighborhood टा strong अछि. Immigrant population with low quality of amenities and degrading house condition and mark these localities. When a city grows, the lower middle class move out of the inner city areas and the new immigrants move to these dwellings within lower end. जब city टा expand करेगा बढ़ी जाए तो लोग कौन करती जाम ही जाए भीतर inner city area रू लोग माने छाड़ी की सब पेरी की बांधी एवं neighborhood से लोक माने आस्ती सेठी रही जाती. मिडिल क्लासेस लो क्लासेस एनम को भीतर ई प्रकार neighborhood रे स्टडीज चेंज हुए. सो ट्रेडिशनल नेबरहुड एंड मॉडर्न नेबरहुड. मॉडर्न नेबरहुड पहले हमें जो टाइप ऑफ
neighborhood relations we have in our past. Now it is changing. In modern neighborhood, reciprocal relations is completely absent. ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି there is a distinguish clearly କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା neighborhood ପୁରୁଣା ଏଇଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ neighborhood has its essence of neighborhood ର ଯୋଉ purpose ତା ପୁରୁଣାରେ ବି ଅଛି ନୂଆ ବି ଅଛି। ତେଣୁ only neighborhood ଟା village ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, modern city ରେ metropolis decropolis ରେ ମଧ୍ୟ neighborhood ଅଛି। So this so urban city रे जो neighborhood अछि, urban city रे ताको आमे सब suburbs और ethnoburbs बोली कहि थाउ। Space economy pointed out Anthony and King has reiterated that in his recent book. He reminds us the suburbs mean an outgrowth of the city. Suburbs ता कोन जो city रा outgrowth बा city बाहर बा side रे जो growth होता को हमें outgrowth बोली कहछे, city outgrowth बोली कहछे। तेणु केतेका सिटी रे बड़ बड़ सेतले सिटीटा बड़ ही होची, अधिक बड़ ही होची, सेतले खाली सबर्ब नांदी, सेते केते एथनोबर्ब्स मध्ये सुपरबर्ब्स मध्ये जोगुछन। That means settlement on the outskirts of the city, the origin of which economic, social, cultural are generalized by development inside the city. City development रे केतेका city inside city रे केतेका स्वतंत्र development हो जहाकी city रा बाहर को मध्ये expand करबो। So another sociologist named King cites the example concept of ethnoburbs. Ethnoburb a new concept like suburbs. Ethnoburb would was coined by a geographer Wee Lee बोले जाने geographer a concept देचंदी ethnoburb. It means suburban ethnic cultures of residential areas and business districts in large cities. Ethnoburb is a new concept. It means the this concept of ethnoburb is coined by geographer Wee Lee का द्वारा एटा प्रथमे कॉइन करा जायतिला एवं यार अर्थ होची a cluster of residential areas, a group of residential people living in a particular area. They may be multi-ethnic communities. One विभिन्न ethnic रही करती, one ethnic minority group has a significant concentration. गोटे ethnic नो बहुत परिमाण लोक से निवास करते हैं, सेटा को हमें ethnoburb बोली कहते हैं। A suburban ethnic cluster of residential, suburban ethnic culture of residential areas or business districts. एटा को कहला ethnoburb. Another term is also being used was the technoburb. Technoburb we also discussed another category in this urban areas, that is technoburb. That is the role of technologies in creating and maintaining suburb. High technological post-suburb growing around in the edges of the old city areas. So technoburb and promote it is to television. The technoburb is instantly linked with the countries of the home. So technoburb is a term that is used by King to refer to the role of technologies in creating and maintaining suburbs. It is called technoburb. So technoburb, ethnoburb, or suburb. These are adjacent to the neighborhood. These are neighborhoods. These are neighborhoods of the city. Then urban influences of rural areas. Urban influences on rural areas. So urban or rural, these are the two community that is living within a city. आमे गोटे शहर रे साधारणतः शहर जनसंख्या को आमे को कोन दुईटा भाबरे the human civilization has grown under two groups, that is कोन rural और urban. Rural और urban. ए दुईटा कम्युनिटी रे लोक माने गोटे टाउन रो बा अर्बन एरिया रो बास करंती. सो
people, so urban areas growth basing on urban area, urban city grow particularly due to industrialization. Or industrialization is only one factor. There is other people increasing population, increase the population has led to urbanization. Then so urban areas has a great influence on rural areas. Urban area rural area upare अनेक गुड़े influences अच्छी. So how urban area influences, because urban area rural area को impact करे through different ways. Urban impact through migration. Urban area through urban rural area को केमती influence करे ना migration. And there are some people migrate from urban to rural area. Urban rural migration जो तक हुआ. So when urban people migrate to rural area, naturally there is a great deal of influence. They are influencing the rural areas. So when rural area को influence करते हैं, how they influence? And they influence by their behavior, their lifestyle, their ideas. So people in urban areas, they come back to new ideas, new thoughts. ये सब को नहीं किसी गांव को आसंती है, गाँव रे गोटे परिवर्तन आने को चेष्टा करते हैं. So that is also impacting rural area. Then how can the influence करते urban area? Urban area are influence करते because people from rural area, rural urban migration होती. People are migrating from rural to urban areas in search of employment. Employment जाऊँ when the rural people got employed in urban area, they bring with them urban culture, urban lifestyle. They earn money from urban area. They spend that money in rural areas. They follow the urban house style. They follow the urban lifestyle. They follow the urban. इस सब गुड़ा को समाने follow करी बात वाला. So urban area रे change, rural area रे change आती. So आउगम होती. There is a people are moving from rural to urban areas for education. Education पाई अनेक लोग जाते हैं rural to urban areas. So when these educated people come back to rural areas, they also bring a number of changes in the rural area. Rural area अनेक changes rural area लोग माने urban educated है कि पुनी गांव को पहले naturally गांव रे number of changes आसीबो. So that also brings changes in urban area. So number of changes. How can be economic influence? Urban areas are synonymous with the market economy. Economic influence मतलब economic changes आउंची के urban area brings a number of economic changes in rural areas. कौन changes ची ना urban होची basically what is synonymous with market economy. Urban economy होची कौन market economy. If this seems that we can say that economy of urban areas are very different from rural areas. So marketing of produce, economy by marketing of produce with direct repercussion on production, selling of labor, buying and resale of contrasted marketing one's own product. Marketing होची in economic influence होची मैम different industry शहर राची तो शहर राची जो industrial product सेटा गांव को आसी. So that also influences the village economy, economic influence, rural economic influence होची at the same time. So rural area agricultural items has been marketed in the urban areas. If rural people produces different agricultural, maybe vegetables, maybe all these items, dal, rice, all these whatever produced in rural area are sold in the urban area. So by that way, the money comes to rural area. So economic influence, urban that way also influences urban area economic influence. How can economic influence come? And a number of changes are also brought about by the supplies of urban product to rural areas. Then how can the change होची ना commercialization of agriculture because of urban influence. Urban area rural area जो agriculture थला सेटा कौन थला सेटा केवल to fulfill the urban rural needs.
that was just fulfilling their needs. People, rural people, fulfill their needs only through agriculture. They produce whatever agricultural product they produces. It is for their own needs and necessities. Fulfill kortala. Kintu due to the urban influence, the commercialization of agriculture begins. Agricultural commercial. So people now, rural people are producing agricultural products not only for their fulfilling their own needs, but also for the commercial purposes. So many village people are producing different agricultural products for commercial purposes. Commercial purposes kari taku industry. In agriculture, due to urban influence, and agriculturist of a village are became a आमे गोटे इंडिविजुअल जे गारे चाष करथला ताको गोटे आमे नियर कल्टीवेटर कहला बट एतला अर्बन इन्फ्लुएंस तापर पड़ी जाउची से सेतला कोन एग्रीकल्चरिस्ट हे जाउची बा गोटे ताको गोटे बिजनेसमैन में जाउची एंड एग्रीकल्चर इज आल्सो प्ले द रोल ऑफ ए बिजनेसमैन बिकॉज़ ऑफ commercialization can a different urban people, urban middlemen, they are also come to the villagers for purchase of agricultural product and market them in the urban areas. So by that way, they are also commercialization of agriculture has begun increasing. Because of this selling, marketing of product, agriculture product in the cities, that village people are getting good economic returns. Good economic return. बेले बेले से भलो इकोनॉमिक रिटर्न पाउचंती जोटा इंक्रीजेस देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जोटा तांकर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड रे अनेक उन्नति आनी सो हाउ केमती इनकर पछि ना क्रॉपिंग पैटर्न of the villagers has been influenced by the urban influence because of the increasing demand for agriculture products from village. So village agriculturists are now changing their cropping patterns. Cropping pattern change to have more produce. अधिक उत्पादन केमती करबा कले आमे शहर रे बिकिबा सेति पई विलेज लोक कोन करजंदी वर्तमान सब यूज करजंदी फर्टिलाइजर न्यू केमिकल्स दे आर आल्सो चेंजिंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न आगे लोक माने कोन करथले ना गारे केवल गोटे प्रकार चाष दिटा कर दउतले तांकर आवश्यकता मिल जाउतला किंतु वर्तमान नाउ एवरी टाइम पीपल एवरी आउ जो सीजनल कल्टीवेशन होतला सेटा वर्तमान नाही वर्तमान ऑल सीजन में ऑल वेजिटेबल्स अपन अवेलेबल होची मार्केट केमती लोक मन तो चाष करले देखुचंदी द मार्केटेबिलिटी अछि तेनु सेटा को आखे रखी दे आर चेंजिंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न जेतले गोटे वर्ष को गोटे चाष अमल करथले गोटे फसल अमल करथले वर्तमान से दुईटा तीनटा पर्यंत फसल अमल करिया को चाहेलेनी तेनु क्रॉपिंग पैटर्न ने चेंज होची नाउ दे आर आल्सो यूजिंग HIV high yielding variety of seeds are used by the villagers. It is due to the influence of the urban area जाल जाउछंती HIV आनी कि आउछंती हम जोडे अधिक प्रोड्यूस दोची so all these are changes are also taking place in villager how kon hochi na there is a because of urban influence there is a influence on rural area on the rural people which changes their skills skills मतलब change करछि एवं they have attached with some more and allied occupations आगे गार लोक माने केवल चाष को गोटे वृत्ति भाव ग्रहण करथिले किंतु वर्तमान ड्यू टू अर्बन इन्फ्लुएंस सेमानकर मते इकोनॉमिक अर्बन स्टाइल ले सेमान निजर इकोनॉमिक नीड्स को बढ़ेलेनी एवं ताको सैटिस्फाई करया को सेमाने डिफरेंट allied एग्रीकल्चर एंड allied एक्टिविटीज सहित निजको अधिक रो अधिक जडित कलेनी है एवं सेन आल्सो न्यू स्किल्स अपडेट देयर स्किल करछन नुवा स्किल अधिक चाष रे केमदी स्किल व्यवहार करी अधिक प्रोड्यूस करबा एसो ऑपरेशन ने गुरुत्व दोचंती so as a result you now says that how agriculture commercialization of flower cultivation was absent in Odisha tela because nowadays
Odisha people nearby, they are also cultivating flower cultivation colony, এবং skill बढ़ेगी से flower करी तक मुझे set करें. So the cropping pattern and all these are changes are occurring in the villages due to urban influence. So urban influence फलरे हमारा अनेक गुड़े change होची. Then occupational changes in the periods of globalization. Occupational changes केमती होची. Globalization कहले कौन? Globalization. Globalization कहले हमें basically कौन होचु? Globalization is something total considering globalization means the considering the total globe as a market. LPG globalization is a new economic policy that has been introduced after the policy liberalization. जेतेबेले liberalization world रहला सेतेबेले हमें तीनोटी policy को adopt कले, that is LPG, liberalization, privatization and globalization. And globalization means reducing locally and marketing globally. It is so globalization made the total globe as a market. Samudaya Vishwa ko that is open competition. There is open competition is available. So globalization is a kind of new economic policy. एक नूतन प्रकार अर्थनैतिक नीति जहाँ द्वारा समुदाय विश्व को every country are opening up their economy for world competition. विश्व प्रतियोगिता पाई प्रत्येक देश तार अर्थनीति को मुक्त करुछि एवं गोटे देश रे तमे एटी लोकली प्रोड्यूस करी तुमे सेटा को पृथ्वी सारा विभिन्न स्थान रे ताको विक्रय करी पारे. So that is expansion of market. So new economic policy is adopted in India. Adopt this globalization during the Narasimha Rao Prime Ministership Narasimha Rao, P.V. Narasimha Rao, and the Prime Ministership of Manmohan Singh, 1991. से समय हमें liberalization policy ग्रहण करो एवं globalization we became a part of global market. India, that means by this globalization, India open up its market for global competitions. As a result, more and more companies तमें देखो Indian market रे. आगुरु prior to globalization तमें देखो तो India रे केवल गोटे दिटा कार चला, that is ambassador of क्या. किंतु वर्तमान almost all world car markets are flooded in Indian markets. Because it is globalization or liberalization. So in this context, so globalization, there is a number of occupational changes in the periods of globalization. And the globalization asigala, there is only occupational changes. It provides a rural area or bahut change. It provides an opportunity to villagers to sell their agricultural produce, but also supply labor as noted above. See that agriculture produce को वर्तमान village लोग all over world बिक्री करी पाते. Now you know the policy because of globalization पर हमें world village लोग produce करेगी supply of availability of supply of their products. सेवन विभिन्न जगह को supply करी पाते. Adequate resources they earn करी पाते. Urban market को सेवने sell करे. When the villagers get a job in urban areas, he gives up a agricultural activity. किंतु हमें तो देखिलो गोटे केते का villager केते बड़े urban ने गोटे employment पाउची से तारो या कुछ छाड़ी दोची कौन तारो चाषों को छाड़ी दोची. Migrant to urban centers often get their land cultivated either by their kinsmen or by employing farm labor. से farm labor employ use करुची बा labor use करेगी तार चाषों को करुची but तेणु जड़े केमती मैनेज कर दूचे एग्रीकल्चर और अदर मैंने जाकि टाउन रे विभिन्न प्रकार जॉब्स कर. तेणु देयर इज ए ऑक्युपेशनल चेंजेस होची. गाँव में मध्य जो लोक माने केवल चाष भीतर निज कन्फाइन करतले से माने चाष सहित आउ मल्टीपल ऑक्युपेशन साइड ऑक्युपेशन भाबे अनेक गुडे वृत्ति को से माने आपणे नउछथि.
Even there are people who are serving in towns, they are also moving to villages and conduct their agricultural activities. ये सब मध्य करुछथि आउ कोन होची ना नुआ नुआ ऑक्युपेशन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स सिटीज नुआ नुआ ऑक्युपेशन सब ओपन कर सर्विस क्षेत्र रे नुआ नुआ ऑक्युपेशन ग्लोबलाइजेशन जो अनेक प्रकार नुआ नुआ वृत्ति सृष्टि हेउची एवं नुआ नुआ business trade techniques trade and commerce has also become very rampant. Different commercial activity are also rural areas are also increasing. ये occupational changes बहुत होची both occupation of the urban area rural area रे अनेक गुडी occupation change होची in the same style you know आगा गुडे influence example आप नहीं परिवे जे urban influence रे वर्तमान गाँ रे saloon now villages you found saloon so that is this occupation is created in Gupchup wala are also the villagers are also taking the profession of Gupchup selling Gupchups in the village or near schools colleges it is sobu bikri helani chaat Gupchup these are the town occupations are shifting to villages in jauchi it is sobu these are because of the urban influence so is one occupation madhya rural ore सृष्टि होची तेणु ये जो globalization जो the growing disparity between rural and urban areas during this period of globalization is expected to accelerate the mobility of labor ये जो disparity बुढ़ी होची ता भितरे mobility of labor भी होची mobility of labor supply of labor then there are certain intermediaries who are daily brings laborers from villages and sell them at the urban areas किछि लोक अछंती सकाळु से उनकर काम होला they go to the villages collect the laborers employ them in the city and in the evening they even night say in the meantime they are also getting some percentage सेमाने मध्य किछि प्रोफेशन गारे लोक माने काम पाउनांती बेले सेमाने लोक को सेटु नै आसी एठी हाई रेट ऑफ लेबर चार्ज इट अधिक तेनु एठी पाउछन एवं तादरु किछि कमिशन हिसाब रे दे आर आल्सो टेकिंग so these are peculiar type of new occupations are being opened up in the changing globalization फलरे ये सब मध्य होछि and globalization फलरे and new villagers माने मध्य a number of they are also supplying there are some agents the village fees are now in villages you can get your own product thinking they are also supplied to village by the different intermediaries there are also new occupations that are opening now there are certain businessmen in the city they are holding the agriculture they capture the agricultures and supply them seeds fertilizers during that time and directly purchase their agriculture product or vegetable products so these are kind of new urban influence so number of changes occupational mobility are also increasing urban influence रे village रे जो होची they also have different occupation and occupational mobility under the modernization and globalization तेणु सेमाने कोन करछन ना तांग सेमाने तांगर ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन सहित दे आर आल्सो एक्सेप्टिंग न्यू मॉडर्न ऑक्युपेशन सेमाने चाषटा तो टोटल वर्ष सारा होनी तेणु चाष गोटे सीजनल तेणु देयर आर सम विलेजर्स हु आर कंडक्टिंग देयर कल्टीवेशन इन द विलेजेस in the agriculture season and the rest of the season they are also working accepting some tidbits of occupations at the urban सेमाने गारे से चाष गुडा करूछन्ती पुनी एठी शहर को पळे आसी पुनी शहर रे मतलब भिन्न मॉडर्न ऑक्युपेशन एक्सेप्ट करूछन्ती so these are the you know एठी sometimes there is also family there is also division also part in husband is also coming to the city to work some in company in some shops in some malls or in some offices or where the wife is also engaged in the villages as the farm worker these are also happening a number of so exposure rural economy now is exposing to national market but then exposure has gone rural area
So people are also, besides there is OMPED, OPOLOPED, all these different governmental and non-governmental. So there are also certain non-governmental, so OMPED-like organization are also opening open milk organization. They are also collecting the milk from the villagers. So villagers, alongside with their agricultural activity, they are also engaged in this milk, goat keeping, milk keeping, beekeeping. These side activities are also working. That thereby their economic standard also increases, and they are engaged in a multiple kinds of occupations. So these are the influence of urban on it. Then urban area are only good political influence and political changes in village have close relations with the process of change taking place in the economic activity. The economic activity lokong pakare eta a common feature je when the economic condition of village people become better off, tankara political change madhya hochi. Ebong sei jo urban influence phare tankara jo economic activity bend hela se urban influence tankara political changes madhya hochi. The dominant caste they are also now playing an important role. Caste panchayat raj hava palare, there are people, villagers are now getting a very important role in political aspect. After the 73rd constitutional amendment, jo 3th PSC, panchayat raj institution PRI jo hela amara panchayat, block, district, panchayat. Yes, now the village people are playing a dominant role, and there are also political activism now taking place in the village people. Lokomananka bhitare gaah lokomananka bhitare political activism nechi. They are becoming active due to the urban influence. Urban influence re the urban people are very sensitive to their political activities and actions. So similarly, village people are showing greater interest in their political activity. So number of political changes are also occurred in the behavior of the rural people. Rural people behavior, political behavior, they are also nowadays, they are also playing role in direct or indirect role in village politics. They are participating in decision making process. Villager jo panchayat or jo decision making process re some of the participate korchanti. The awareness of the villages regarding voting behavior, their voting behavior have changed. They are bargaining with political parties for different kinds of opportunities. Some of the people are also selling their votes on the behalf of money. So all these a number of changes are occurred in the political behavior of the people. So nowadays, due to reservations, village political level, no prakar political organization, political parties, so basically alliance, party alliance are also changes. More interest group in village, different interest groups are also working in villages. That interest group working groups in the village, right? Those who are playing a role of a middleman. So the number of political changes are moral order, villages, moral political order that is breaking now. The village people are also giving their votes by taking money from the political parties. Now, political party, new culture of is also developing villages that is being the influence of urban areas. Right? Now, voting time, the concept of a wine culture is also increasing in villages due to this political influence of this. All these political awareness also increases among the villagers. This is due to the urban influence. And similarly, social influence. Urban nights have a number of social influences on that area. And to the social aspect, the various whether it is urban or it is rural, different social aspects are interrelated. Be it economic, be it social, be it political, or there is an interrelation between all these aspects. Whenever so changes in one aspect automatically brings trigger changes in other aspect. Gote aspect परिवर्तन आसिले से अन्य aspect रे मतलब परिवर्तन आसिबो. तेणु से हिसाब रे
the social influence urban the social influence जेतबे चेंज आसिला social influence रे मध्य the people rural people are also socially influenced by the urban people काहेकि the when first urban influence ता गारे केमती हो ना प्रथम influence ता तंकर हला economic influence कारण प्रथम people first attracted by the economy so naturally the social influence मध्य धीरे the social influence of urban area are spread very gradually along with the economic influence जेतले urban area रो economic influence ता गां को shift कला naturally economic influence सहित जोड़ी हेकि कारण हम कोइ दी social aspect economic aspect political all these are interrelated whatever the aspect of interlink with each other so changes in one aspect has the repercussion on the other जेतले economic रे change होता repercussion आसीबो जेतले लोक माने कर economic standard बढ़ला आसी political field रे तंकर interest को in awareness बढ़ेले participation कले ई सब हैला कारण similarly when there is a economic influence हला by economic changes होची सेतबे social change मध्ये हबो some गार urban influence रे केतक social influences मध्ये rural area रे feel कराला change in तो सर्विस रिलेशन हमर थिला जो गां रे जो जजमानी सिस्टम थिला that was also being greatly influenced by the urban जजमानी influence थिला जजमान कहले तो जजमान और कामिन रिलेशंस थिला जजमान और कामिन रिलेशन थिला among the people जजमान्स जे सर्विस प्रोवाइडर और कामिन होची सर्विस रिसीवर किंतु urban influence रे से रिलेशंस ता has been shattered सेटा वर्तमान village रे आउट का प्राय दिखा जो नहीं now village barber are instead of engaged in judgment relations bounding himself in the judgment relations they are making saloons से माने saloon करके बसलेनी professionalization of these judgment relations जानी तेनु जेतेबेले village ता integrate ही जो अर्बन इकोनॉमी सहित सेतबेले जने बारबार आउ तार जजमान को शेयर न कई से तार सेलून करके ताठू अधिक पैसा प्राप्त करबा आसारे से तार चेंज करछि तार सोशल रिलेशन को हलानी तेनु से तार डेली कम्यूटर हे जाउछि से तार निजे गारे तार से सेलून करछि काटिछि से मध्य शहर को पळे आसी गोटे सेलून काटिकी पुन जाई सकाळे गार ता सेलून काटिकी से मध्य करछि तेनु से कम्यूटर बेसी से कम्यूटर हे जाउछि से अवतार जजमेंट रिलेशन को बंचे रखि परनो सो दैट इज चेंजेस इन दिस कस्टमरी सर्विस रिलेशंस ऑफ ए लॉन्ग ईयर ट्रेडिशनल सोसाइटी सेटा मध्ये हरानी चेंज होछि similarly on the social influence of urban people that is just जो हमारा joint family system has greatly influenced joint family ties has been greatly disturbed by the urban influence तेणु सेठी मध्ये सोशल चेंज होची अर्बन इन्फ्लुएंस रे इकोनॉमिक कंपल्सन जो इकोनॉमिक कंपल्सन दो फैमिली सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली ब्रेक डाउन एंड न्यूक्लियर फैमिली कम टू टाउन एंड देयर इज आल्सो चेंजेस इन चेंज होची ये सब चेंज मध्ये होची अर्बन हिल्स एंड रूरल सेक्टर हैज आल्सो बीन अ फैक्टर इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन ट्रेडिशनल स्टेटस बेस्ड डिफरेंशिएशन इन रूरल एरिया रे जो स्टेटस बेस्ड डिफरेंशिएशन थिला तादर मध्ये चेंज होची तेणु स्टेटस आम जो थिला ब्राह्मण आर एंजॉयिंग मोर स्टेटस से कांसेप्ट हैज बीन चेंज्ड सोशल इन्फ्लुएंस वर्तमान ब्राह्मण आर गेटिंग नो सोशल रेस्पेक्ट इन विलेज रादर ए शूद्र ए वेल्दी शूद्रस who was engaged in town and earning huge amount of money they are getting better social prestige so now status social status अपेक्षा वर्तमान occupational prestige educational prestige income prestige are being modern occupation मध्य वर्तमान गुटे प्रेस्टीज सिंबल हरानी ऑक्युपेशन कास्ट आइडेंटिटी हैज बीन लूजनिंग कास्ट आइडेंटिटी जो थिला वाज अ ग्रेट अपर सीक्रेट सोशल स्टेटस
Now, number of changes are also appearing. So, as a result, number of social influences are also marked in the behavior of under the influence of urban and rural life. Then, number of cultural influence. Cultural influence. So, cultural influence madhya अनेक गुड़े होची. A number of because of this urban lifestyle, there are a number of urban culture has been transmitted to rural culture. Rural को जाएगी सेठी करने के लिए cultural change आनी. Cleanliness, sanitation, ये सब number of changes, cultural change की. Urban views, corruption has been transferred from urban to rural areas. But in rural area, corruption is not there. But because of urban influence, the corruption has become part of rural life. So you may say mother culture, the culture of wine culture, bar culture, that also has gradually shift from urban to rural areas. So there are certain cultural dance during marriage ceremony. This was not a rural area feature, but now dances people the barjatri mane jo dance korte bartan rural area ke madhye se spread karani. So these are kind of cultural transmission. For a number of cultural change rural area culture madhya change karani. Number of changes are also occurring in rural area. Number of changes, new kind of behavior pattern. There is a number of changes in the behavior, lifestyle, dress pattern. These are also changes due to urban influence. So consumerism, upabhoktavada. Our village culture to satisfy with the limited, but now because of urban influence, consumerism now increases in villages. Consumerism. खाउटीवाद वा उपभोक्तावाद सेटा मध्य बढुची. Consumable items, now the village people, there is a more demand from products. ये सब जिनसा product बहुत बढी गलानी. विभिन्न प्रकार urban product, विभिन्न प्रकार urban जो हाम्रो गारे जो सब यूज होता है, now we are depending on urban products. Urban industrial products purpose बढी जाउची. We are no more using our जो बटा बाटनो. Rather, we are depending on urban style of the different kinds of urban products like masala gunda. So there is a kind of cultural change as also occurring, and because of the urban influence, a number of cultural changes are occurring in villages. So these are the certain changes that has occurred in village, in rural sector, in the economic sector, because of economic changes. It's the first initiator, and because of associated with other changes, the political changes, social changes, cultural changes, associated with the changes in the village. This is due to urban influences. So with this, we complete the block 5. So any questions, please ask. Sangram, any questions? Students, any questions? Doubts? No, sir. No, thank you, sir. I think students, they don't have any questions. So Okay, tomorrow, 3 p.m. again you will join. Thank you very much, sir. Thank you, sir.